कुछ बड़े दोस्ताना अंदाज में बात कर रहे हैं और ये फ्री किक दी गई है और सलाह के हाथ में गेंद है। अब देखना है कि तो मैं ये कह रहा था कि शायकीन जो है आज बहुत पलवला अंगेज़ तौर पर शोर गुल कर रहे हैं और ये इस बात का वाज़िया सबूत है और रोज़े रोशन की तरह ये आया बात है कि ये जो KSL हमारी जिसका ये पहला एडिशन है बहुत कामयाबी के साथ ये अपने पाए तकमील को पहुंच रही है आज। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ऐसे टूर्नामेंट मुस्तक़बिल करीब में फिर होंगे और शायकीन बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं ऐसे टूर्नामेंट्स के लिए। और इसके लिए जितने भी मुंतज़मीन हैं और मुंसलिक अदारे हैं और उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस तरीके का ये मुतारिफ़ कराया है ये लीग और आगे चल के और भी ज़्यादा हो सकता है कि और भी टीमों का कुछ इजाफा हो JSL में, तो इंशाल्लाह वो और भी ज़्यादा कामयाबी की तवक्को है। मैं साजिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो थोड़े से अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी तारिक साहब, यहाँ पे एक बार फिर बॉल एक्वा के पास, अच्छी ट्राई बट सीधा शब्बीर के हाथों में बॉल। ये जो अबरार है तारिक साहब, इस लड़के ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। खाली जी ये मुझे एक प्लेयर लगा जिसने मैच्योरिटी दिखाई है मिडफील्ड में और बीइंग जस्ट 17 और 18 ईयर्स ऑफ एज और फिर इतना मैच्योर फुटबॉल खेलना, आई बिलीव दिस बॉय हैज़ गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। जी बिल्कुल गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है और ये कहने की बात नहीं है बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली दिखा दिया है कि वो कितने कैलिबर के प्लेयर हैं। और हमें ये फ़ख्र हासिल है कि जितने भी हमारे यहाँ पे इस्तिज़ा कोच साहिबान हैं ये सब लड़के उन्हीं की मारूनी मिन्नत है और जिस तरीके की फ़ुटबॉल आज चल रही है इसके लिए हमारे जो कोच साहिबान हैं उन्होंने जो 2011 से ये मशल हाथ में ली थी, आज उसी की रोशनी अभी भी चल रही है बल्कि रोशन से रोशनतर हो रही है। और लोग जो बच्चे हैं, बल्कि मैं इतना कहूँगा कि पहले लोग कतराते थे अपने बच्चों को फ़ुटबॉल की तरफ लाने में। कभी कोई वालिदैन कहते थे डरते थे कि कहीं लग ना जाए, चोट ना लगे, लेकिन आज मुझे देखने को मिलता है कि किस तरह अपने वालिदैन बल्कि ख़वातीन किस तरह एकेडमीज़ का रुख करती हैं और अपने बच्चों के साथ आती हैं, टिफ़िन उनके साथ होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है जब ये जो वर्जिश के औकात होते हैं उसमें वो उनके लिए रेफ्रेशमेंट वगैरह भी ले आती हैं साथ में। लेकिन ये अंदिया है कि यहाँ की जो पौध है और जहाँ ये नई जनरेशन है और जो यहाँ आजकल के वालिदैन हैं बहुत बाशऊर हो चुके हैं, वो अपने बच्चों को मंशियात से दूर रखने के लिए ये वाहिद ज़रिया है सपोर्ट्स जिसमें लोग जोक दर जोक अपने बच्चों को शामिल करवा रहे हैं। और इसी बीच ये गेंद बाहर चली गई और फिर मैं साजिद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी कमेंट्री और कुछ तबसरा और फुटबॉल से मुतल्लिक़ कुछ ख़यालात का इजहार करके लोगों को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। यहाँ पे एक्वा को चाहिए कि अगर क्योंकि इसके बाद हाफ़ टाइम का ब्रेक होगा, तो अगर गोल यहाँ 1-0 वो डाउन भी हैं और अगर हाफ़ टाइम के बाद भी उनके पास अभी पूरा हाफ है गोल को इक्वलाइज करने के लिए, सो दे शुड नॉट लेट देमसेल्व्स डाउन। और यहाँ पे एक और मूव राइट साइड से बनता हुआ अच्छा सा कटबैक और बॉल गोल क्रॉस बार से ऊपर से निकल गई। सो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था इससे पहले भी कि सोबान को हमने देखा है कि वो ज़्यादातर अटैकिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे थे और वहाँ से एक वीक लिंक हो सकता है जो एक्वा एवेंजर एक्सप्लॉइट कर सकता है। और वही चीज़ बार बार एक्वा ने कोशिश करी है बट अभी तक वो उन बॉल्स को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। चांसेस मिले हैं उनको, तो ये चीज़ को उनको हर बार अगर वो नहीं कर सकते, बट दिस इज़ द एरिया
जो वो एक्सप्लॉइट करके अपने लिए चांसेस कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर अगर मौका मिले तो उसमें वो गोल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, मैं इतना कह सकता हूँ कि फुट और 1.5 फुट के दरमियान ही फासला था गोल होने में। 1.5 फुट या फुट के फासले से गेंद ऊपर से चली गई, और गेंद की जो सिमत थी बिल्कुल गोल पोस्ट के बाईं तरफ थी, और मेरा ख्याल है कि गोलकीपर इस अगर थोड़ी सी 1 फुट नीचे चली जाती तो गोलकीपर बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाते इसे रोकने में। और यहाँ पे आकिफ जैसे प्लेयर को ऐसी चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज़ द एक्सपीरियंस्ड गाय। और ये चीज़ों से, क्योंकि रेफरीज आजकल के जो हैं दे आर नॉट लीविंग इवन अ सिंगल इंच, अगर जब भी उनको कोई मौका ऐसा मिलता है तो वो कॉशन वगैरह दिखाते हैं प्लेयरों को। तो यहाँ पे अगर एक्वा को कहीं पे आकिफ को कार्ड वगैरह हो जाता है तो वो एक्वा के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आकिफ को थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। तो बिफोर दे गो फॉर अ ब्रेक, so this is the time where the elegant, they need to keep the composure. They should go in the dressing room with that 1-0 lead, and then they can think of कि कहाँ से क्या गलतियाँ हो रही है, और उस पर जाके फिर वो जो पेप टॉक वगैरह कोचेस का है वो उनके लिए काम कर सकता है। मीनवाइल यहाँ पे चाहेगा एक्वा एवेंजर्स कि ये जो लीड है एलिगेंट एफसी की, उसको वो जल्दी से वो इक्वलाइज गोल करके वो बराबरी पे लाके खड़ा करें। और यहाँ पे अच्छा टैकल साहिल का, एंड बॉल वेंट फॉर अ थ्रो इन। ये जो गैर संजीदगी और गैर ज़रूरी हरकत हैं, इनसे जो अच्छे प्लेयर हैं उनको इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि जैसा साजिद साहब ने कहा कि ये मोहलिक साबित हो सकता है, क्योंकि जो रेफरीज़ हैं ये इनकी निगाह बहुत तेज़ है और ये कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जैसा कि इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि ये कोई भी कंप्रोमाइज़ नज़्म ज़ब्त के ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ अगर इनको दिखाई दी तो ये फ़ौरन कार्ड निकालते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए ताकि गेम का टेम्पो न टूटे और गैर ज़रूरी हरकत से हमारे खिलाड़ी बाज रहें। तारिक साहब, अगर मैं आपको बता दूं कि मैं जब नीचे था क्राउड में, और हमने पूरा KSL को कवर किया है यहाँ पर, और क्या बढ़िया बॉल मूसा कुरैशी की तरफ से हयात को, और दिस इज द बट वेल डिफेंडेड बाय उरफान, एक्सलेंट डिफेंडिंग। जो पेशेंस उरफान ने वहां पे दिखाया, ही वॉज इनसाइड द बॉक्स, एंड मीनवाइल दिस द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ, एंड United Elegant FC will go into the dressing room with 1-0 lead in their favor। और क्या बढ़िया बॉल खेला था हयात ने। जी, इसके साथ वक्फा हो गया है, पहले हाफ का वक्फा है 10-15 मिनट का। तो हम यहाँ साजिद साहब के साथ मैं मीर तारिक आपसे विदा चाहता हूँ। इस दौरान साजिद साहब अगर कुछ कहना चाहें तो। जी, हम जल्दी से मिलेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद, क्योंकि अभी हाफ टाइम हो गया है। यूनाइटेड एलिगेंट एफसी के हक में ये हाफ अभी तक रहा है, और उन्होंने एक उम्दा गोल करके यासिर ने जो उनको बढ़त दिलाई है, तो वही बढ़त अभी तक उन्होंने बरकरार रखी है। सो मिलते हैं आप लोगों से हाफ टाइम के बाद। थैंक यू सर।
जश्न है, ये सेलिब्रेशन है स्पोर्ट्स का, ये है ट्रू सेलिब्रेशन ऑफ फुटबॉल। ये आज कई मुद्दत के बाद ऐसा क्राउड, ऐसा एग्रेशन एंड पैशन दैट वी आर ऑल वाचिंग टुनाइट एट सिंथेटिक टर्फ टीआरसी। ये है केएसएल का ग्रेट ग्रैंड फिनाले, वी आर ऑल वाचिंग इट। एंड वो तमाम जो इस वक्त हमें बराह रास्त लाइव देख रहे हैं, द एचडी ब्रॉडकास्ट, दैट इज ऑल लाइव। वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग दैट लाइव फुटबॉल का पैशन एंड दैट पैशनेट तरीके से जिस तरह से ये आइडिया कंसीव हुआ एंड वो खूबसूरत सा अंदाज जिसे हमने आपके साथ सेलिब्रेट किया है, अलग अलग मैचेस, अलग अलग दोस्त, अलग अलग अंदाज, ये फुटबॉल का सही अंदाज जिसे हमने आज यहाँ सेलिब्रेट किया है। एंड हियर वी आर, हमारे साथ एक्सपर्ट्स है, ये कहानी शुरुआत इसकी कैसे हुई। सो लेट्स बिगिन। कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्राउड आप देख रहे हैं, आज एग्रेशन आप देख रहे हैं, आज पैशन देख रहे हैं, जैम पैक, कोई भी सीट आपकी बची नहीं है यहाँ पर। जो कोई जगह का छोटा सा पीस है, दैट इज ऑल ऑक्यूपाइड। आज हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स का अंदाज। सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यह आइडिया कंसीव कैसे हुआ, कहां से आगाज हुआ केएसएल का? केएसएल एक्चुअली आगाज़ हुआ जब हमने टीम किया था डाउनटाउन हीरोज़ फुटबॉल क्लब। डाउनटाउन हीरोज़ फुटबॉल क्लब पे जो मैनेजमेंट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उसके बाद मुश्ताक ने, हिनान ने, हमने बहुत अच्छे से मेहनत करके वहाँ से पैदा हो गया केएसएल। केएसएल में बहुत सारी टीम है, एजाज साहब है, एजाज साहब का टीम है, बाकी मैनेजमेंट है जिन्होंने कंसीव किया एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट का। और केएसएल का आप इस वक्त देख सकते हो इर्द गिर्द ये उसका आउटकम है। एंड दैट्स द सेलिब्रेशन। एंड आज की इवनिंग खूबसूरत सी है, केएसएल का ये खूबसूरत सा अंदाज। एंड इस तरह का टूर्नामेंट, इस तरह का इवेंट पुल करना बहुत मुश्किल होता है, टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कोच साहब जो इस खेल को जानते हैं, फील्ड को जानते हैं, प्लेयर्स को जानते हैं, कश्मीर के फुटबॉल के सिनेरियो को डिटेल में जानते हैं, सर टेक्निकली हाउ डिफिकल्ट वाज इट? The team effort which we have put make it easy, and the biggest thing what we have done over here is we have worked professionally with all the equipment, all the logistics, including the recording, including the broadcast, and all things were totally professionalized. Nothing was being compromised to get this tournament to the next level. You know that in football we say fans are the blood of football. Yes. Today you can see the blood. Full That is people. all around, you can see that. This is not the victory of football. This is the victory of the fans who come with thousands. No more than 20,000 people are in the ground. People don't get seats, but still the passion is so that they are on the stands. They are standing from last 2 hours. This is what we are all about. This is what KSL is all about, and hope the next season will better than that. Hope we can get good number of seats more, and we request the Secretary Sports Council to increase the number of the seats. And really, it is all wonderful, and credit should go to the Downtown Heroes Football Club. ऑलराइट, सो जहां से आगाज हुआ इस आइडिया का, ये है खैबर सीमेंट कश्मीर सुपर लीग पावर्ड बाय अतवास हुंडई। मेरा नाम आरजे रफीक है एंड वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग। माइक के पीछे की कहानियां हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर, बट वक्त की कमी, वी हैव टू प्ले अगेन बिकॉज द पैशन इज ऑन। कीप वॉचिंग, ये है शाम सुहानी एंड देन एग्रेशन इज ऑन। कश्मीर सुपर लीग, लेट्स वॉच इट लाइव। आपके स्क्रीन पर ये कहानी है फुटबॉल की, ये है कश्मीर की, ये जश्न बाकी है मेरी जान। लेट्स वॉच इट, लेट्स सेलिब्रेट द ट्रू सीजन ऑफ फुटबॉल। मेरा नाम आरजे रफीक है, लेट्स गो। ये कहानी आपकी स्क्रीन पर। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, लेट्स मूव। आप सॉरी सर।
में क्वालिफायर नंबर 1 में it was Elegant Unit FC who dominated the show and they still got into the grand finale. आज मौका है एक्वा के पास, लेकिन अभी एक्वा की टीम 1-0 से पिछड़ रही है और आप देख रहे हैं कि उवैस बशीर को जो है रिप्लेस किया गया है, उसको इन किया गया है एक्वा की तरफ से। ये पहली चेंज देखने को मिली है, लेकिन खिलाड़ी के अंदर पैशन, जज्बा बरबरा और तमाशाई खड़े बैठे इस मैच का आनंद लेते हुए। कश्मीर सुपर लीग एट इट्स बेस्ट। क्या सुहाना मौसम, क्या सुहाना मौसम और क्या यादगार ये लम्हे और ये वो शाम है जिसका इंतजार था सबों को। आखिरी मैच, आखिरी मरहला इस लीग का और आखिरी जो हिस्सा है इस लीग का बराह रास्त कश्मीर सुपर लीग के ऑफिशियल पेज पर देख रहे हैं। एक्वा एवेंजर्स की टीम कोई गोल नहीं, एलिगेंट यूनाइटेड एफसी लीडिंग बाय 1-0, लेकिन अभी तक जो गोल मशीन है उसको खामोश कर दिया है एक्वा एवेंजर्स के डिफेंडर्स ने। और पहला गोल जो दागा एलिगेंट की तरफ से वो थे यासिर। आप देखना कि दूसरे हाथ में क्या अदनान अयूब की येलो आर्मी काउंटर करने में कामयाब हो जाएंगे, गोल करने में कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो आप बने रहेगा हमारे साथ। तो ओवर टू यू हिलाल साहब। Okay, Sajid Saab, please, I want to know from your side, what should Avengers do to make one they have to make it 1-1. If they have to win, they have to score 1 goal. If you will be the coach of Avengers, what would you change and what mindset you will put you in your players in the break? Yes, Hilal, definitely I will be telling my players because I've seen the players are doing too much with the ball, and when they win the ball, they need to, put those passes, exploit those spaces between the defense, behind the defense. But so far, they are not doing that. Whenever they get the ball, they take too much time, they take too many touches with the ball. We have seen Soban going up, creating those attacking movements for his team, and space can be exploited. Aqua tried to exploit that space, but getting so many touches with the ball, taking so much of time, they give the players a chance to drop back and get back into the ship. Yeah, definitely. As you see Elegant from the other side, whenever they get the ball, if Shanawaz gets the ball, if he has a space in front of him, he runs with the ball, and they always. After a break, hope he will join us very soon. Meanwhile, the ball possession is with still Elegant United playing very sensibly, keeping the lead intact, and don't let the ball lose it cheaply. You can see they have string a pass of 5-7 passes from last 3-4 seconds, and it was a foul. You don't need to be foul. Sajid, please tell me, when you have a ball in the opponent half, why to foul? Yes, so this has happened so many times. Not only Elegant doing that, but Aqua did it and giving the free kicks to the opponents. And those free kicks can be dangerous to any team when you have a players like Akif Rishi in the box, and when you have the Soban who can deliver those balls in the box. So meanwhile, Akif going solo, but well defended. So here, Hilal, if you have seen or observed, whenever the Aqua Avengers are putting pressure, going close to the defenders, they manage it to be the threat for the United Elegant FC. So this is what the United Elegant FC, they need to put pressure, they need to, close down the players of Elegant FC as much as possible, so that they will not give them the space, they will not give them the chance, because Shahnawaz Bashir is the one who is having that ability to put those long balls to Akif Rishi or maybe into the space for Waris. Still 40 minutes of game left. Hopefully both teams will work as per as their coach has instructed them, as there is a change for Aqua Avengers, who has put OS into the field, and hopefully we can see a better competition. Over to you. Yes, Hilal Saab. So I was down with the crowd at the half time. It's crazy. It's frenzy out here.
too many people enjoying the game of football, and what an incredible sight to behold. This was the dream of KSL, to bring people from all walks of life watching the game. I saw people who don't know anything about football, but the fact that the football is very deeply rooted into our society here in Kashmir, and they are here, they just heard that there is a final of big two teams going on. They made sure they fill up the stands and enjoyed the game as well. So तारिक साहब, आप तब से मैच ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या यूनाइटेड एलिगेट जीत रही है, इतने लोग यहाँ पे मौजूद है, इतना फैनों का बलबला है, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी मैच किस दिशा में चला जाएगा? 40 मिनट बचे हैं। जी बिलाशुबा, ये खेल जो हो रहा है ये बड़े जुनून के साथ खेला जा रहा है। दोनों टीमें बराबर कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं कि एक्वा के लिए अभी वक्त पर ये गोल होने का चांस, और ये गोल कर दिया गया है। बहुत खूबसूरत गोल, शानदार वापसी यहाँ पर एक्वा एवेंजर्स की टीम को। जिस चीज की तलाश थी, जिसके लिए वो तरस रहे थे, वो मौका मिल गया। खुशी का ठिकाना नहीं। सुपर गोल बाय एक्वा एवेंजर्स। What a ball it was! Hayat played such a wonderful penetration pass to Musa, and a solo run by Musa. He was one-on-one with Urfan, managed to get that ball, managed to keep that ball inside the penalty box, and then a cutback. And here, Aqua Avenger equalized in 51st minute of the game. Really, the individual brilliance of Musa, you can see that was really a wonderful opportunity for Aqua Avenger. Musa with the ball. क्या शानदार कोशिश ये होती है करा, और क्या शानदार पास, उसके बाद फिनिश लाजवाब नंबर 11 का। शानदार कुछ और शानदार रिजल्ट। Yes, Sajid, if you can see, Urfan literally leave the ball, he was behind the player. This is not the way. If you are defending in penalty area, you have to look for the ball, and the way Irfan could have done better in this at this moment, but it was Musa all the way who steals the show, and he cut back to his skipper, and who wonderfully puts the ball, rolled the ball inside the net. Oh yes, definitely. I think it was a defensive error from Urfan there. He was looking at Musa but not looking at the ball, and the fact that Musa actually very cleverly skipped past him and put the ball back for Adnan. Let us talk about Adnan. Again, Adnan for Kashmir Avengers FC scoring the most important goal of this tournament for him. This is his 5th goal of the tournament, and what an important time to score. We can see 15,000 plus spectators in the attendance, and it's frenzy out here. And what a goal by AQUA Kashmir Avengers FC to bring the game back to the light, because the game was going away from them, but they, and it was all because of that pass by Hayat Sajid Saab, the way he saw him moving from the left hand side and played the ball through. Yes, before that, it was an all-important touch from Musa to Hayat, and what a penetration pass was played to Musa, who kept his composure, managed to keep that ball within the field, and then what a wonderful cutback it was to Adnan. So throw in for AQUA Avengers FC, United Elegant FC, deep into the half of AQUA Avengers FC. Maybe Jamshid can go for a long throw in, but I think Urfan is there with the ball. I was mentioning about this, whenever you will put the pressure on the defense, this is what AQUA Avengers should have been doing, because they have the experience, there is no doubt about that, but they are slow in retreating back, they are slow in getting themselves back into the position. And here we saw that example that was wonderfully exploited. The space was wonderfully exploited by Hayat, and AQUA Avengers managed to equalize. Some minutes before, I was telling to Sajid, if we have the coach of this Avengers, he put the same words to me. Hope, I don't know how that have reached to the players. Maybe some power who has sent these words to the players' ears, and they have exactly worked the same way as Sajid and I was discussing regarding if Sajid would have been the coach of Avengers at this moment, what should have been they done. But now let's see which way the stone will turn.
and it was really a wonder. This is the final what we expect. People need goal. People need goal. Fans need goal. Everyone loves to see the ball roll into the net. Hopefully, many more to come. Over to you, Jahangir. मौसम बड़ा शानदार सुहानी शाम मैच सज चुका है ग्रैंड फाइनल सज चुका है और ये है मुकाबला रेड आर्मी वर्सेस वर्सेस येलो आर्मी तो एक तरफ आकिब ऋषि एंड कंपनी दूसरी तरफ अदनान एंड कंपनी क्या शानदार मुकाबला पहले गोल दागा आकिब ऋषि की टीम ने काउंटर बैक किया और दूसरे हाफ में जो गोल दागा एवेंजर्स के खिलाड़ी ने और मैच बराबरी पर यही लोगों को चाहिए यही आपको भी चाहिए और ये फाइन एटमॉस्फेयर हमें भी चाहिए शानदार मौसम कश्मीर सुपर लीग की जितनी तारीफ करें उतना कम दिस इज रियली अ बिग प्लेटफॉर्म और कश्मीर सुपर लीग के मैनेजमेंट को सलाम और इस टीम को सलाम स्पोर्ट्स काउंसिल को सलाम दे हैव गिवन रियली ब्यूटीफुल एंड ब्राइट open out for our youngsters to exhibit their talent really a great thing from their side 57th minute onto the clock and the score remains at 1-1 and what we didn't expect that AQUA Avengers will come out blowing out in the second half. Meanwhile, there is a change for AQUA Avengers. We will shortly confirm which player came in place of whom. Salah plays a long ball onto the left hand side which has been cleared, but again it came back to Salah who clears it again and it has been defended by Adnan on top of the can. Adnan take a shot, but it's a good tackle by Shahnawaz and crowd loves a good tackle, crowd loves a hard tackle onto the players. A long ball played which has gone in for a throw in. You can see the fervor among the people and the kind of football that is being played in these last stages of Kashmir Super League. We hope bigger and better Super Leagues to come here in Kashmir next year onwards, and what a success this tournament has been. Still, we have almost half an hour left to the game and Salah is on the ball who heads it clear straight to Hayat. Hayat plays again to the Musa on the left hand side. Musa strives into the box. Musa takes a touch outside, but Urfan is there this time and he doesn't let him go in. Urfan is marking him again, but he has taken him off. But a good tackle by Aqib Ayaz, number 10, and the ball has gone for a throw in against United Elegant FC deep into the half of Kashmir, deep into the half of Elegant FC's half. So it would be a throw in there. I think Shahid has been brought in for United Elegant FC and Sahil sorry, let me recollect the name. Sahil Ejaz has been taken out for United Elegant FC. Meanwhile, Oas is on the ball, who plays it back to his defender Salman. Salman, who is known for his long balls, maybe he could shoot one again. And Salman tries to change the flank onto the left hand side, but which has gone out for a throw-in. Fakhar, now since AQUA Avenger, they got that all-important goal. They have managed to push the Elegant United FC, into their defending third. But now they need to be extra cautious because they have Akif Rishi, Elegant United. They have Akif Rishi. Whenever the ball will be played to him, then the defense of AQUA Avenger will be again tested. Shahnawaz on the ball, moving. Shahnawaz on the ball, plays the ball out to Waris, who plays it back to Shahnawaz, and a couple of touches between Shahnawaz, Soban and Waris, and the ball has gone out for a throw-in. Junaid with the ball on the touchline. He plays it to Sahil, but ball has been retrieved by Soban there, who plays it to Waris, and Mansoor will make sure that the ball doesn't go for a throw-in, and Waris plays a long ball towards Akif Rishi. Akif Rishi heads the ball, but it's straight to the goalkeeper Burhan. Yes, right now you can see both teams, Ajit, they are not losing the ball, trying to keep the possession of the ball, and whenever they think that there is a player in front, one-on-one or 2 versus 1, they put the ball there. So this is the way when you want to win the game, when you want to win the big matches, possession of the ball is very important for every team. They should have playing from the back. Right now you can see the ball has been again kicked in the midfield. Shahnawaz has the ball. See, this is the way, whenever you get the ball, you need to put it forward. Again, Musa is the ball, entering. Yes, he will try to enter the penalty and cross the ball. Absolutely a great save by the veteran goalkeeper.
तो मैच अभी तक जो है 1-1 की बराबरी पे, जज्बा, पैशन, वलवला टीमों में भी, खिलाड़ियों में और तमाशा में उससे ज्यादा। और देखना चाहते हैं आज के इस मैच को कौन सी टीम जीत जाएगी, लेकिन जितने भी खिलाड़ी, 22 खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, और ये वो सितारे हैं कश्मीर सुपर लीग के जिन्होंने दिखा दिया कि वी आर द बेस्ट। और फाइनल में ये दोनों टीमें मौका मिलता हुआ एक बार फिर मौका, लेकिन के ऊपर से जाती हुई गोल लाइन क्रॉस कर गई। शानदार एटमॉस्फेयर, लोगों की तादाद दर्शाता है कि कश्मीर में फुटबॉल का पैशन कितना है। और मैच एक की बराबरी में दूसरा आपका खेल जारी, लेकिन जरूर कैसे उनके बदले क्या जरूर इस वक्त जो है मन में चल रही होगी AQUA Avengers के, क्योंकि इससे पहले क्वालिफायर में उन्होंने जो है एलिगेंट यूनाइटेड जो है मैच हारा। तो आज मौका है इस शाम को सहाना बनाने के लिए। विल इट बी अ ग्रेट इवनिंग फॉर AQUA Avengers और एलिगेंट यूनाइटेड? आप बने रहिएगा। It will definitely be a great evening for one of those teams, but it has already been a great evening for these fans out here in Kashmir Super League inside the stadium. Meanwhile, Stanos passes the ball. It's towards Akif. He heads the ball, but it's again wide. He always wins those headers. But unfortunately, this header didn't went in like it usually does for him. Maybe it's the pressure, maybe it's the occasion, maybe the ball was not perfect as he would expect it. 20,000 plus spectators here in Kashmir Super League. History has been created. See, there is no place to sit. People are standing on the towers. No place to stand as well here. See, the history has been created too. This is the biggest attendance we have seen. Meanwhile, Shahid on the ball, he wins the ball and he plays it back to his midfielder Shahnawaz, but the ball has been won. Can AQUA Avengers counter attack again? It's a good ball played out to Sahil. Sahil is running towards the ball. Mansoor is on with him, but Mansoor clears the ball and the ball has gone for a corner. Fakhar, on behalf of the organizing committee, I would like to take the opportunity to announce here that after the completion of this first edition of Kashmir Super League, the organizers will be organizing the same kind of tournament in Jammu, followed by the Youth Super League. So the good news for the youth players, they can also get the same platform by which they can showcase their talent, and a much needed initiative which we are lacking as when it comes to the youth development or youth tournaments. There was a shot taken by Musa with his left foot from top of D, but the ball has sailed away from the crossbar and it's a goal kick which Shabir takes a very small step to shoot. Okay, you can see Musa with the ball at the last moment should not have been kicked the ball the way he should, and he needs to play something because lot depends on him and we need him to deliver good things for the team. Meanwhile, if you can see AQUA Avengers and Elegant both try to break the deadlock of 1-1 and try to give some relief to their team. Meanwhile, Akif is totally guarded by two players whenever a ball has been passed to him, both in the air or in the ground, and AQUA Avengers try to work from the back, playing from the back, so that they have the maximum ball possession. एक बात मैं बताऊंगा आपको दिलचस्पी की, वो ये है कि जो दो गोल स्कोर हुए, दोनों गोल जो है इसी गोल पोस्ट के अंदर जो है दागे गए। ये दिलचस्पी है इस मैच की। और एक खिलाड़ी यहाँ पर देखना जो राइट कॉर्नर में जो राइट पोस्ट में जो गोल पोस्ट, क्या वहां पर गोल होगा या नहीं। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि दिलचस्पी से भरा हुआ ये फाइनल, एलिगेंट यूनाइटेड एफसी 1 गोल, AQUA Avengers 1 गोल, और मैच का 65वां मिनट जारी। Yes, definitely. So Physio, I think, is signaling towards the bench that the change might be required for Liaquat, but we'll let us see if the confirmation comes in soon. Tariq साहब 25 मिनट बचे हुए हैं, आप
खेल का तो बहुत मज़ा उठाया आपने इस कश्मीर सुपर लीग में, और कमेंट्री बॉक्स में भी हमें यहाँ पे अपनी नॉलेज से हमें नवाजा है। तो जी आप बताइए आगे को क्या हाल इस मैच में? जी मैं इतना कहूँगा कि मैं आज बहुत मसरूर हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा ममनून हूँ। और ममनून किसका हूँ? KSL को जो मार्ज़ वजूद में ले आए, मैं उनका ममनून हूँ। मसरूर भी हूँ, ममनून भी हूँ, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे बच्चों ने खेल खेला है और शायकीन की दिलचस्पी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है फ़ुटबॉल में। जैसा कि हम पिछले ज़मानों में देखते थे, लोग पेड़ों पर, दरख्तों पर, छतों पर होते थे, बिल्कुल वैसा ही समा आज मुझे यहाँ पे भी लग रहा है। और ये एक कामयाबी का एक अंदिया है जो हमारे KSL ने हमें फराहम किया है। हाँ, ये जो हमारे फ्रेंचाइजीज़ हैं या काबिल जी, यहाँ पे फैंस हैं वो बहुत जोश खरोश में हैं, उनके हाथों में झंडे हैं, रंग बिरंग कपड़ों में मलबूस सारे लोग कोसे कज़ा सा मंज़र पेश कर रहे हैं। जैसे धनक के रंग होते हैं, वैसे ही स्टेडियम में हर कोने में रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि KSL जिस मुकाम पर पहुँचा है, ये आगे चल के हिंदुस्तान के गली, हर कोचे, कूबकू और करिया गांव शहर देखा जा रहा होगा। और क्यों नहीं, यह गोल होने का बहुत ख़तरनाक तरीका था। ये हो सकता था अगर जो फॉरवर्ड खिलाड़ी थे अगर थोड़ा सा विजिलेंट होते तो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये डिफेंडर्स की थोड़ी सी गफलत थी। और मैं फ़खर साहब आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप मुझे मौका दे रहे हैं। आप अपनी कमेंट्री को जारी रखें, क्योंकि आप में जो रवानी और तेज़ी है और हमारे कयूम साहब में वो काबिल दीद है। आप अपनी कमेंट्री को लोगों के लिए वक्फ करें। Sure, thank you, Tariq Saab. Meanwhile, ball is with AQUA Avengers FC. OS is leading the charge with the ball. He plays it back to OS, and OS plays it to Hayat. Hayat takes a touch to Adnan. Adnan plays it back to Hayat. It was a good 1-2 between these two players. And Akif Rishi receives the ball on the front line. Akif Rishi can run at the defender, and he plays it back to his midfielder and will go into the defensive positions. Meanwhile, counter attack again. Abrad is on the ball. Who takes a touch to the left side? Again, he is in. What beautiful feet. Can Hayat take a shot? Hayat takes a shot, but it's straight to the goalkeeper, and he has collected the ball into his hands very easily. Fakhar, when I saw Hayat on the pitch in the first 11, so despite not being fully fit, still he was put there in the first 11. I believe it is more of psychological, you can say, a decision by Khalid Qayyum rather than tactical, because he is not fit, but he is doing the job for his team. He is the one who is involved in every attacking movement for AQUA Avengers, and he is the one who was involved in the assistance of that wonderful goal scored, equalizer scored by AQUA Avengers. तो जब आपकी टीम इक्वलाइजर दागती है तो आपके टीम का मोरल जो है वो बूस्ट हो जाता है। तो दूसरे हाफ में जिस तरह का खेल पेश किया AQUA एवेंजर्स की टीम ने, गोल करने के बाद उनका जो पैशन है, वलवला है, वो सातवें आसमान को छूता हुआ। और यही वजह है कि आकिफ ऋषि एंड कंपनी जो है इस वक्त जो है थोड़ा सा साइकोलॉजिकल दबाव उनके ऊपर जरूर हावी है। एक बार फिर मूसा कुरैशी, अच्छा पास, शानदार मौका, बॉक्स में जाना चाहते नंबर 11, लेकिन वहां पर दो डिफेंडर दीवार की तरफ मौजूद और बॉल को जो है क्लियर करने में कामयाब। अभी तक हमने आकिफ ऋषि गोल मशीन को जो है ओपन होते हुए नहीं देखा है, और ये थोड़ा सा जो है चिंता का विषय हो सकता है एलिगेंट यूनाइटेड टीम के लिए, क्योंकि आपके जो मेन खिलाड़ी हैं उसको जो है डिफेंडर्स ने, अपोजिट टीम के जो डिफेंडर उन्होंने जो रोक के रखा है। Yes, it's very pertinent to mention that so the staff behind the success of these both teams meanwhile the ball is with Akif Ayaz. He crosses the ball inside the box.
but it has been cleared by Salman. It was a very tricky clearance. It could have gone anywhere, but it has gone for a corner for United Elegant FC. So I was saying the staff behind, the coaching staff behind these both the teams. So for United Elegant, we know their head coach, we know their manager, but their assistant coaches Muzaffar Ahmad, Hamid Rashid, their goalkeeping coach Sajid Nayak, Sajad Nayak, their physiotherapist Dr. Burhan, and their ball crew Wasim Bhatt. They have been very instrumental in making this team a successful team, and their contributions must not go unnoticed. Same for AQUA Kashmir Avengers FC. Khalid Qayyum, their head coach, Zaheen Zargar, their manager, their assistant coaches Wasim Shahid and Shan Noor, their goalkeeping coach Abrar Bhatt, their physiotherapist Dr. Shahid Wali, and their ball crew Abid Ayaz. So these are very important people. They are very important people in making these teams a successful ones. Because without their support, their head coaches, without their analysis, their head coaches don't have the exact their insight are very helpful in making these teams into successful teams. Meanwhile, 72nd minute onto the clock, Soban with the ball, and Soban has been tackled by Adnan, and foul has been given by the referee. Sajid. Fakar, I believe Soban is lucky here because it was not that dangerous tackle on him. He tried to do that fancy things, and when you try to do those things, you tend to lose that ball. But what atmosphere we are having here at synthetic TRC ground. The final which everybody was waiting for, and what a nutmeg by Aqib, but well recovered by Javed, who has been brought into the field as a sub for Liaquat. Okay, Sajid, if you can see, Elegant defense don't have any pressure because there are very few players from AQUA Avengers who are putting pressure on them. Either it is Hayat or it is Adnan. So it makes easy for them to defend one player by 4 players. So if AQUA Avengers has to move forward, they need to bring their right wide player and left wide player up so that they can make some pressure. Same is the reciprocal is done by the Elegant, who has put good number of players in front. You can see the ball in the middle and very less player up front. What do you think, Sajid? Can it make any impact, or as a coach, is it good for a team to play in the midfield and not putting the ball forward and play? I think here AQUA, they have gone a bit defensive. Whenever they win the ball, they don't have anybody on the wings. They don't have anybody, as a number 9 to whom they could play and, create that attacking fast movement for themselves. But so far they believe in winning that ball in the defending third, then trying to keep that ball and expecting something which now they have not managed to get that. And meanwhile, Hayat with the ball, and again this ball was a wasted pass, I must say. So this ball was only played to the wing because there was no number 9 up front to whom the ball could have been played maybe on the feet or maybe in the space. Yeah, so we need to have a good number of players. Either the AQUA Avenger is waiting for the penalty shootouts. Maybe that may be a chance of their coach who is willing to. But meanwhile, the ball was with Aqib and it was a really golden chance for him. But full points to the defender who was with him all the time and don't give him the space. And this is what we need now. The ball possession by Elegant United. Meanwhile, the ball has been put it out. Sajid. Yeah. So whenever you will give the space to the Elegant United players, they will look for Aqib. They will put those long balls behind the defense, and people that opportunity to the players like Shanawaz Bashir, Urfan, who can deliver those long balls behind the defense. You will see the AQUA defenders will put themselves into
kind of pressure. But whenever you go close to them, whenever you pressure on United Delicate defense, this is what they have done exactly when they equalize the goal. So they need to keep momentum going. Otherwise, these last 15 minutes are gonna be very difficult for AQUA Avengers to. Yeah, you can see Adnan Ayub, their captain, who motivates and keep the morale of this player up, discussing with every player what will be the best things. 20,000 history created. You can see in the ground there is no place to stand, no place to sit. This is what we need in the football for the coming days. Hopefully the same crowd we can expect in Jammu and we can expect in the youth leagues. Meanwhile, both teams, I think Hayat has been called out, maybe for the treatment, or let's see after some time. Over to you, Fakhr. I think the change, Moonis might be coming on for United. Moonis player with his defense with his long balls as well, and Muzammil Saab, coach, is using him. I think in place of Suhail Khurshid would be brought up. Let's confirm that. I think from a tactical point of view, Sahil Saab, I think the Avenger is sitting back now, and like Hilal Saab said, that they might be looking at penalty shootouts now, because psychologically they have won the last game in penalties, and they would be banking upon their. Yeah, it should be an advantage by the referee, because we don't want fouls when the ball is with the same team whose player is down. So referee from the last many matches, they have done wonderful job, but to continue the game, continue the flow of the game, the referee needs to continue the game. Don't give this foul, because the ball was already with the Avengers. If you talk about the success of KSL, referees have played a very important role in this. Be it our local referees or be it the referees who came from outside. And the credit must be given to Nazir Saab for managing these referees, convincing these referees to come down to Kashmir and do this league for us. यहाँ पर मौका मिलता हुआ एलिगेंट यूनाइटेड की टीम को, उनके खिलाड़ी अच्छा मौका, लेफ्ट पैर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हेडर की जरूरत है, लेकिन खिलाड़ी काफ़ी पीछे और बॉल पे पिल की डिफेंडर ने। तो अगर हम कश्मीर सुपर लीग की बात करें तो जब से शुरुआत हुई इसकी, तो तब से थोड़ी सी जो है रमक हमें लगी, लेकिन जो ही ये कश्मीर सुपर लीग आगे बढ़ता गया तो एक छाप छोड़ चुका है ये। और अगर हम ओवरऑल देखेंगे सारे कश्मीर में उन खिलाड़ियों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए उम्मीद की किरण ये बन चुका है कश्मीर सुपर लीग। और जो मुरझे से हमारे ऐसे खिलाड़ी थे, ऐसे यंगस्टर्स थे और जिनको लग रहा था कि उनका फ्यूचर जो है इनसिक्योर है, लेकिन कश्मीर सुपर लीग ने उनके लिए एक उम्मीद की किरण उजागर किया। और ये सारा क्रेडिट कश्मीर सुपर लीग मैनेजमेंट को जाता है, स्पोर्ट्स काउंसिल को जाता है, एट हेड्स ऑफ कश्मीर सुपर लीग मैनेजमेंट। तो स्कोर अभी तक जो है 1-1 की बराबरी पे, और एलिगेंट की तरफ से अटैक होता हुआ सोबान के पास अब बॉल आ रही है मौके की तलाश में, लेकिन जिस तरह का खेल दूसरे हाफ में एक्वा एवेंजर्स ने खेल पेश किया है तो वो काबिल दीद और काबिल सताइश। Right now the ball is with the Wales, but the problem is whom he is going to play in the front. So this is what we need from the coaches, not here, but other coaches who are listening us from this broadcast, that when your team has the ball, you should put maximum number of players in front, so that there will be same should be done by AQUA Avengers, because if you have the ball in the midfield and you don't have any players up front, it is a waste. Sorry. Yes, so crowd control would be very tough here. If personally people, take my opinion, I will not go for, I will not wait for the tiebreaker to happen, because in tiebreaker anything can happen. You can see the tiring legs of the players there. I will try to put extra bit of effort, I will try to put extra bit of pressure
beat from both sides, and there the physical fitness and the mentality of the players will be tested. But here both the teams, they are trying to do too much with the ball. They are taking too much of time with the ball. So if you want to create those half chances, you want to create those attacking moves. Cross into the box coming from Waris. It has been half cleared by Javed. Yeah, And I was- ball is with Musa. I was talking about those attacking moments of the game. So if in the dying moments you want to create something, you need to rotate the ball as quickly as possible. If you keep the ball with you and take too much of touches with the ball, the possibility of scoring will be less. Yes, meanwhile Jamshid is on the ball. He has taken over from AQUA, and the ball has been very well tackled by Musa Qureshi. Musa Qureshi is putting his best foot forward in this final, and he was the creator-in-chief for that goal which AQUA Avengers scored. Last 10 minutes left. Hilal Saab. Meanwhile, the captain is showing something to the coach. Maybe he wants some other players to come in and to reinforce something in his team. Meanwhile, a very long ball to Akif. If he will get the control of the ball, but very well defended. Still the ball is with AQUA. Okay, now it is, the ball has been out of the danger area of AQUA United, but still the ball is with the Elegant, and cheaply it went for the throw-in. And meanwhile, we need what AQUA Avengers captain is still waiting to get something good out of this, and he's totally into the game, wants his players to move up. Fakhr. Yes, so what we have seen here today in this final is both teams are giving their best out. They want this trophy, and everyone would want that beautiful KSL trophy which is there for the taking for both these teams. And whosoever wins today put their name in the history books, winners of the first Kashmir Super League edition. Meanwhile, Adnan plays a good ball towards Musa, but it has been well intercepted by Arfan, and Urfan launches it very long. So I think AQUA has done a good job in keeping Akif silent till now. Meanwhile, ball towards Musa on the wing. He runs at Akif. Akif has tried to tackle him, but Urfan comes to cover for him, and Musa is there like a workhorse. He has worked so hard today, and it is incredible to see that such a youngster having such composure, and such, like Sajid was saying, the tired legs. You can see the tired legs here. They are falling down. They are looking for physio to help them out because just 7 minutes remaining, the most important 7 minutes of Kashmir Super League, and these players know it, the coaching staff knows it, and everyone else knows it. And there's a change, I think, coming on. I am seeing from here that Hazik Baba is on the line. We don't know who is going out of the game, and maybe some tactical instructions or with Hazik Baba, maybe he can change the game. Meanwhile, number 10 is on the ground, and the ref and his physio Burhanwani always ready to see. Physios has a lot of work to do because they have only 2 minutes to analyze, to give the medicine, and to fit the player within 2 minutes. This is very important for a physio. So Sajid, what do you think about this little time, more work, and you need to get the player fit again? I think all the physios, they have done a tremendous job because they were all experienced physios who were the part of each and every with every team, who were the part of every team. And Burhan, we have seen him off and on the field running, giving his best to get the players back onto their feet. Not only Burhan but other physios also, since the league was very short and the number of games were more, and these physios, they were having that extra burden on their shoulders, getting those players back on the pitch with less amount of recovery time, and for me they have done tremendous job. Yeah, let us see what the coaches has
put in their players' mind whether they want to go for the penalties or they want to. Meanwhile, the ball is on the left side, and it was a wonderful save by goalkeeper. Hopefully, these are the things when you need to put work from the left side. हाँ जी, अभी आप कह रहे थे कि अगर पेनल्टीज़ पे आ गया, गेम पेनल्टी पे चली जाएगी, तो उसमें मैं इतना कह सकता हूँ कि नफ्सियाती बरतरी जो होगी वो एक्वा को होगी और नफ्सियाती दबाव एलिगेंट पे होगा। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, आप तो उस्ताद लोग हैं, आपको ज़्यादा मालूम है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो गोलकीपर है वो उसके पास पिछले वाला हौसला अभी बरकरार होगा और जिस तरीके से उन्होंने 3 पहली पेनल्टी 4 पेनल्टीज कन्वर्ट की थी वो भी खासे नफ्सियाती तौर पर मजबूत होंगे। और मेरा अपना ख्याल है कि अगर पेनल्टीज पे बात आ गई तो थोड़ी सी बरतरी, थोड़ी मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, थोड़ी सी बरतरी होगी एक्वा को, और आप इस पे ज़्यादा बेहतर तो जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड, 20,000 प्लस 20,000 से ज़्यादा लोग, और हर कोई जो खेल प्रेमी है जो यहाँ पर मौजूद है खड़े खड़े मैच का आनंद लेते हुए, और हकीकतन ये दर्शाता है कि कश्मीर सुपर लीग की सक्सेस। और वीआईपी गैलरी को आप देख सकते हैं, हर जगह जो है खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम, और ये है कश्मीर सुपर लीग के लिए सजा हुआ स्टेडियम, और ये है टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर। 87वां मिनट जारी और अभी तक स्कोर 1-1 की बराबरी पे। और यहाँ पर कोशिश नंबर 11 की तरफ से खूबसूरत आके ब्रिशी को जिस तरह से आज के मैच में जो है रोक के रखा है डिफेंडर्स ने, तो वो प्लस पॉइंट है एक्वा के लिए। लेकिन स्कोर अभी तक 1-1 की बराबरी पे। क्या हम पिछले मैच की तरह जो कि दूसरा क्वालिफायर था, लेकिन यहाँ पर मौका बनता हुआ एक्वा के लिए, मूसा कुरैशी एक बार फिर अकेले लड़ते हुए शानदार कोशिश, लेकिन फिनिश नाकाम। बॉल जो है गोल पोस्ट के बाहरी किनारे पर लगी और इस तरह से खतरा टलता हुआ। लेकिन मूसा कुरैशी ने जिस तरह का खेल आज पेश किया तो लाजवाब परफॉर्मेंस की तरफ से, और आप देख सकते हैं कि जो पहला गोल स्कोर उसमें भी इसकी जो है बहुत बड़ी खूबी थी। Whenever you will put the pressure on the defense of United Elegant FC, you will create something out of nothing, and Musa has shown this every time he has went with the ball. He has gone close to those defenders to win those balls, and he has succeeded in every moment. And this is what the other supporting players should be doing for AQUA Avengers. On the other hand, this is the time when Elegant United needs to keep their composure. Just it will be maybe 5 or 6 minutes before the final whistle, and then the game will go to penalty shootout. So again, nicely cleared. Again the ball with Musa. Adnan is there. This is for the first time I am seeing somebody there up front. But it's good to see that United Elegant FC, they brought those bodies behind the ball, and there were much number of defenders seen. And here, but Shabir is there to win that ball for United Elegant FC. Yeah, Sajid, if you can see the ball from Adnan, he needs to put the ball behind, as you were telling earlier, that he needs to put the ball behind the line. When you have a player marked to you, I don't think it is a good idea to play on the player's feet when there are two players. Better to place in the space so that the player can run and he is in the open area and the goal is in front of him. तो एक तरफ एलिगेंट यूनाइटेड की जो टीम है दिफा करने में मजबूती के साथ वो दिफा कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हमला और पायदार पे हमला यहाँ पर कर रही है एक्वा एवेंजर्स की टीम। लेकिन क्या हम पिछले मैच की तरह दूसरे क्वालिफायर की तरह जो है टाई ब्रेकर देखेंगे, और बहुत करीब ऐसा ही लग रहा है। लेकिन पैसा वसूल मैच आज तमाशाइयों के लिए, आज रिकॉर्ड तोड़ अटेंडेंस यहाँ पर हुई, ये सारा आप दर्शाते हैं, ये आप सब कुछ देख रहे हैं टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर से। और अभी हमें देखना है क्या 2 कदम में कामयाब हो जाएंगे एलिगेंट के, शानदार कोशिश, लेकिन अभी तक जो है दूसरे गोल के इंतजार में। लेकिन आकिब ऋषि को आज जो है बिल्कुल रोक के रखा है, ये प्लस पॉइंट है एक्वा के लिए।
And for the viewers who are viewing us, this is the free entry. There is no tickets, no money. Everyone has free access to the stadium because we want people to come in, and there are 7 minutes of injury time added by the referee. Meanwhile, there is a change. So what we expect in the coming days, that maybe there may be a ticket of 5 or 10 maximum amount, so that it will help to develop football. But right now it is free entry, free access to everybody, everyone. There is a separate ladies stand, and there are some reserve boxes for both the franchisees, and this is what we need in the coming years and in the coming KSL edition 2nd. Meanwhile, Hayat is down, as Sajid was telling, that it is a psychological pressure on the opponents to put Hayat in the ground, and because one man is continuously checking when the ball is with the AQUA Avengers, one man is continuously guarding. So Sajid, please. Yes, I already mentioned that more than it's being a technical change, it is a psychological effect of Hayat there on the pitch, and it has resulted in a positive way for AQUA Avengers. Meanwhile, the game has been stopped because of some intervention, but well managed by the volunteers, by the J&K police. The crowd has been so disciplined so far. So I must thank, and I will like to take the opportunity here to thank each and every fan of J&K for being so disciplined throughout the tournament, and we will be expecting the same for the another 10 minutes. If this game will go to the tiebreaker of if any team scores a goal, this stadium is gonna erupt like anything. Yes, I second you for there is no security. There is no security in the boxes. We can see that disciplined crowd, as we are always, as people are coming to enjoy the game. They want to see a score. They want to see the goals. Meanwhile, let us hope that the game should end it in the ground before the tiebreaker or penalty shootout. Meanwhile, again, you can see the less number of players in front for the AQUA Avengers. A throw in favor of AQUA Avengers taken by Musa, but he put the ball to a player. Maybe it will be a long throw in. Meanwhile, I will give the mic to Mr. Tariq to say some words for the crowd, for the fans. जी हम शुक्रगुजार हैं शाइकिन के, जिन्होंने न सिर्फ वो खुद आए हैं बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लाए, बच्चियों को भी साथ ले आए हैं, और बड़े तहम्मुल नज़्म व ज़ब्त से बैठे हुए हैं. और अगर ये खेल पेनल्टी शूट आउट पे गया, Fakar, this is the moment for me. The free kick before the final whistle will be blown maybe in couple of minutes, and here the Adnan will be taking the free kick for AQUA Avengers. This is where I will put my effort. I will put more players for that delivery of Adnan, and even if you will see the right side of Shabir, the goal was empty there, but the only thing was needed was that delivery. So here again the opportunity was lost. We have just 3 minutes more before that final whistle and before this game will move to the tiebreaker. जी मैं नज़्म ज़ब्त की बात कर रहा था. अगर ये टाई ब्रेकर पर चला गया तो हमें पूरा भरोसा है अपने शायकीन पर कि वो बड़े इत्मीनान और बड़े एहतियात से पेनल्टीज़ का मुशाहिदा करेंगे और किसी किस्म की बेज़ाब्तगी नहीं होगी, इसकी हमें पूरी तवक्को है. जी. So 95th minute onto the clock. Last 2 minutes left for this Kashmir Super League, and then there could be penalty shootout to follow. If
United Elegant has to do something otherwise, and I think they have a corner or a throw in a dangerous position, which will be played soon enough. And so Sajid Saab and Hilal Saab, let's get back to your predictions. Who will do you think will triumph this time in the penalty shootout this time around? Who do you think? Before the penalty shootout, this is a long throw-in, and we all know Jamshid, who can put those long throw-ins inside the box, and it can be the good opportunity for Elegant. But I believe it was a foul on Akif inside the box, and the throw will be taken again. So Hilal, Jamshid with the ball, throw in before that final whistle. How important it's gonna be for United Elegant FC. You can see, don't do this thing. This is not the way. They can get a simple penalty. They will put down, but it was really again Musa coming, and the ball is still in the field. Maybe still a very dangerous position. Still the ball is the penalty area, and still the ball, and another corner. Maybe they are demanding a penalty kick. Maybe, but the referee has think. Otherwise, they have taken the penalty corner very. Okay, but still Akif got it, and this was a wonderful hit by number 4, and the ball straight went. And number 2 is on the ground. Hopefully, everything is right with him. Sergeant, what you expect? What happened over there? I was just watching the other way. It is a bold decision by Musa, throwing that body. So otherwise, the AQUA Avenger could have seen something which they would have never thought of in the dying moments of the game. So hats off to Musa. For me, Musa was brilliant. Yes, especially he was really great from the left wing in the second half. He has put every effort, everything to work for his team. Maybe this may be the last moment of the game before the penalty shootout. The crowd cheering for their team, and everyone wants results. Everyone wants results. Still, nothing has gone down, and I will tell this thing. It is the victory of the people, victory of the fans. We have come with full passion, with full energy, supporting team. There are 2 groups, one extreme do supporting groups, and the rest are supporting both teams. इधर आज सितमगर हुनर आजमाई, तो 3 आजमाई, हम दिन आजमाई। मूसा जो लास्ट मोमेंट से टीम को
टेक्निकली साउंड होना एंड HD वी आर डूइंग इट लाइव एंड एक एक चीज़ लाइव बराह रास्त जाती है, तो कितना मुश्किल होता है इतने बड़े इवेंट को बराह रास्त लाइव लेके जाना? It is very difficult to have such an occasion जहाँ पे आप इतना लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं और सब यहाँ कंट्री के लोग इस पर देख रहे हैं. यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है. यू हैव सीन दैट प्लेयर्स आर प्लेइंग वेरी नाइस फुटबॉल हेयर. बहुत अच्छे खिलाड़ी हमने पैदा किए हैं. वी हैव प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट मोर देन 30 इंटरनेशनल्स फ्रॉम दिस स्टेट यूटी ऑफ J&K. So we hope that this is the first edition of this tournament, first of its kind, and I am sure that in future also we will give a very good chance to our youngsters. Good competition will begin today once again. Thank you. Alright, so यूथ सेंटर स्पोर्ट्स की तरफ से हमने देखा है कि ये सपोर्ट हमें हमेशा मिला है सर. मैम हमेशा रही है जहाँ कहीं भी क्राउड या यंग जनरेशन की बात हो, मैम हमेशा से खड़ी रही है और उनके पीछे बहुत मुद्दत से आप भी सपोर्ट करते आए हैं इतने अच्छे इनिशिएटिव्स को. सर क्या कहेंगे आज ये जो पैशनेट यंग जनरेशन फुटबॉल खेल रही है, ऑल यंग प्लेयर्स, और ये खूबसूरत सा समा आपको क्रेडिट हम देना चाहते हैं क्योंकि यू नो स्पोर्ट्स काउंसिल हैज बीन ऑलवेज behind the young people. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कंग्रेचुलेट ऑल द स्पॉन्सर्स एंड ऑल द मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट जितनी है हमारी टीमों की, और खासकर स्पोर्ट्स काउंसिल जिनका इनिशिएटिव है. वी डोंट इवन रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट एन इवेंट दिस इज, और इसके कितने पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं होने वाले हैं. आपने देखा कि कितने यंगस्टर्स थे ऑल फ्रॉम द वैली हु वर प्लेइंग दिस गेम इन सच अ कम्पिटिटिव एटमोसफेयर, एंड वी कुड सी सम वंडरफुल यंग प्लेयर्स हु आर इमर्जिंग प्लेयर्स फ्रॉम कश्मीर. और आप देखेंगे वो दिन दूर नहीं है जब ये सारे लोग जो हैं बड़ी बड़े लीग्स में खेलेंगे, प्रोफेशनल फुटबॉल खेलेंगे, कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दे विल डू देयर अस प्राउड एंड देयर फैमिलीज एंड दिस टीम प्राउड. आई मस्ट कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स. ये पहली बार है कि इतने स्पॉन्सर्स जो हैं वो सामने आए हैं, एंड इट इज़ ऑल देयर इनिशिएटिव कि इतने प्रोफेशनली, और आप देखिए कितने प्रोफेशनली है, और क्राउड जो है कितना क्राउड ने एंजॉय किया, एंड हाउ वंडरफुली वेल बिहेव द क्राउड वॉज. आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिगिनिंग. आई शुड से दिस इज अनदर बिगिनिंग. यहाँ पे बहुत प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है. आप जानते हैं कितने स्पोर्ट्स फील्ड बने हैं, खासकर ये जो इतना खूबसूरत जो हमारा TRC ग्राउंड है, जैसा आपने कहा कि इतनी ब्यूटीफुल लाइट्स यहाँ हैं कि रात के वक्त फुल HD में आप इसको टेलीकास्ट कर रहे हैं. आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, और ये टूर्नामेंट यहाँ होना इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल आवर फुटबॉलर्स. और फ्यूचर में और भी ये एक प्रोग्राम, ये जो इवेंट है, ये और भी ज़्यादा ग्रो करेगा. थैंक यू सो मच सर. मैम एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ जो सेलिब्रेशन हो रहा है आज, फुटबॉल का सेलिब्रेशन है, यंग जनरेशन का सेलिब्रेशन है, डाउनटाउन फुटबॉल क्लब और स्पोर्ट्स काउंसिल का ये जो एसोसिएशन है, ये जो कोलैबोरेशन आपने किया, हाउ वाज इट कंसीव्ड? किस तरह से ये कोलैबोरेशन? डाउनटाउन फुटबॉल क्लब एक फुटबॉल क्लब है जो यू नो एकेडमी भी चला रहा है, बट देन वो आपके पास एक प्रपोजल लेकर आते हैं जहाँ पर आप इस चीज को बहुत बड़ा बनाते हैं. डे 1 से अभी तक हर मैच में आप खुद आती हैं. जी. I represent government of Jammu and Kashmir on ground. गवर्नमेंट का इस वक्त खासा जोर है, इम्पेटस है. किसी भी छोटी से छोटी जो हम कोशिशें करते हैं, चाहे फुटबॉल को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, तो मेरा यहाँ होना, हर फुटबॉल इवेंट में होना, हर चीज़ में साथ होना लाजमी है. मैं शुक्रगुजार हूँ नासिर साहब की जो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की. आप उनका आना ही एक बहुत बड़ी एक सक्सेस है कि वी ओन दिस सक्सेस, वी ओन फुटबॉल, वी ओन स्पोर्ट्स. और जहाँ फॉर दिस आई स्टिल रिमेंबर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ नुसरत मैम को कि हम फुटबॉल रिवाइव करेंगे, और 4-5 लोग नुसरत मैम के साथ थे इस्लामिया कॉलेज में. बट ये है कि लाइक वी कंसीव्ड द ड्रीम कि वी वुड रिवाइव द फुटबॉल, और ये आप देख रहे हो आज. मुझे लगता है 25 साल के बाद ये ग्राउंड ने, स्टील ने देखा होगा कि कोई मेरे पास बैठा हुआ है. सो ये सब की मेहनत है, मैनेजमेंट, स्पॉन्सर्स, ये जो हमारे इंटर्न्स हैं, इन्होंने बिट बाय बिट हर एक मीटिंग जो हमारी थी, जो स्लाइड, जो भी कोई चीज़ प्रोफेशनली हमने कॉपी किया, इंटरनेशनल में क्या होता है, ताकि इनको ये एक्सपोजर दे दे. क्योंकि कॉन्सेप्ट यही था कि दोज प्लेयर्स दे शुड बी फाइनेंशियली यू नो एम्पावर्ड, दे शुड बी प्रोफेशनली एम्पावर्ड. वो प्लेटफॉर्म मिले कि ताकि कल को इनको डिफरेंस नहीं लगे. So this is, everybody has contributed everything, and thank you very much Nasir Saab, you graced the occasion on final. It's a history itself. Thank you very much. Thanks everybody. My pleasure. Thank you. All right, thank you so much. Let's join the celebration for the champions, ladies and gentlemen. This is ये KSL का the great grand finale that we are all celebrating here. ये खूबसूरत सा अंदाज, ये चैंपियंस की कहानी अब आपकी जुबानी. तो चलिए जुड़ते हैं सेलिब्रेशन में आज आपके साथ.
you're welcome. Please join in for the presentation. Over to Dawood. I'll stay out. Already guest armed. Team already armed. Match ended in a 1-1 draw, and United Elegant Football Club have emerged victorious by a score line of 5-4 in penalties. Now it's time to felicitate the award winners for tonight, but before that I'd like to welcome our guests for tonight. We have Shri Nasir Aslamwani Sahab, Advisor to Honorable CM. We have Shri Sarmad Hafiz Sahab, Commissioner Secretary, Social Welfare and Youth Services and Sports. We have Mr. Wasim Khan from Khyber Groups. We have Ms. Matina Rajput from Events Emporio. We have Mr. Yasir Majid from Athwas Group. Can we welcome our guests with a huge round of applause? Now we start with the usual for the night, that is the Khyber Player of the Match Award, and the award goes to Adnan Ayub. I beg your pardon, the award goes to Akif Rishi from Elegant United Football Club. I request Mr. Nasir Aslam to please present him the check prize of 5,000 rupees alongside the gift and a Snickers from Joy Bean. Now we have another award for tonight, that is Athwas Golden Moment Award, and I request Shri Sarmad Hafiz sir to please present the award to Adnan Ayub from AQUA Kashmir Avengers. We have Khyber Game Changer Award, and we request Mr. Wasim to please present the award to Musa Qureshi from AQUA Kashmir Avengers. We have events. Musa Qureshi is our Khyber Game Changer of the Match Award winner for tonight. We have Events Emporio X Factor Excellence Award of the Match, and we request Miss Matina Rajput to kindly present the award to Yasir Khan from United Elegant Football Club. He opened the score for United Elegant and gave them a wonderful lead. Last but not the least, we have King's Performer of the Match, and we request Mr. Yasir Majid from Athwas Groups to kindly present the award to Salman Latif from AQUA Kashmir Avengers.
आगे का हाँ Now we have awards for the officials for tonight, starting with our first match official, that is Manish. We request Mr. Nasir Aslam Saab to kindly present the award to Manish, who was the next award is for Rohit, who was the AR1 for today's match. Aman Sudan, Hilal Sultan, Abid Yaqub, Abid Yaqub, Tanveer Ahmed. Okay, I believe they aren't present with us here. On behalf of them, Manish will collect the awards. We have referee assessors, our very own Mr. Farooq Shaheen. We have Mr. Muzaffar Ahmed. Mr. Muzaffar isn't available with us here, so Mr. Farooq Shaheen will collect the award on their behalf. We have the match commissioner, Mr. Kamarul Zaman. Now we have the voice of Kashmir Super League, the commentators who have done a tremendous job. I'll start with Sajid Yusuf Dar, who needs no introduction whatsoever. New award, huh? This is the first new award. Next, no. We have Mr. Tariq Mir, Mr. Qayyum Jahangiri, Qayyum Jahangiri. Next new. Saeed Fakhar, A big round of applause. Big round, come on! Shahnaz Iqbal से थी Shahnaz Iqbal Shahnaz Iqbal from J&K Bank Football Club, who is also a member of technical committee. बस वो बाद में करिए Okay, the important one, we have the individual awards starting for tonight. All these have given their blood and sweat for the league, and here they are the winners for the particular awards. With immense pleasure, I'd like to announce the first winner, that is the Golden Boot Award winner for scoring the most number of goals. The winner is Akif Rishi from United Elegant Football Club. He has been the sharpshooter of the season. Can we welcome him with a huge round of applause? The goal scoring machine of J&K. 10,000 from Smart Services, Green and Smart Services. We have another award for Akif Rishi, that a cash prize of 10,000 from Green and Smart Services. Golden gloves. The next award for tonight is the Golden Glove Award, and it goes to Shabir Ahmed from United Elegant Football Club. The Golden Glove Excellence. The next award is the Player of the Tournament Award, the Golden Ball Award, and the award goes to Adnan Ayub from AQUA KASHMIR Avengers. He isn't only the second top scorer, but he has also provided assists for his team. Can we welcome the captain of AQUA KASHMIR Avengers with a huge round of applause? The supreme performer of the season.
Best defender. Emotional certificate. We have the best defender of the tournament award, and the award goes to Soban Hilal from United Elegant Football Club. कौन सी कैटेगरी है? ओपनिंग पर क्या? Soban Hilal has been the unbreakable wall of United Elegant, and not only that, he has provided n number of assists. Offering पर कुछ नहीं की शदान वो चाहिए. We have the best goal of the tournament. Any guesses for that? The winner is Afrin Pare from New JK United. Can we have a huge round of applause? Afrin Pare. Afrin Pare isn't present here with us, so I request someone to take the award on his behalf. The next we have best save of the tournament, and the award goes to Furkan Ahmed from AQUA KASHMIR Avengers. He's not available with us here, so Burhan will collect the award on his behalf. The last but not the least from this sequel, we have the Fair Play Award of the tournament, and the award goes to United Elegant Football Club. I request their manager, Mr. Mohammad Rafiq Baba, to please come up onto the podium and collect the award. They have shown the real spirit of the game. Now I request AQUA KASHMIR Avengers to please come up onto the stage one by one and collect their rewards. Can we have a huge round of applause for the runners up? Come on, they have given their sweat, blood and everything. Best goal. Can we have the officials from AQUA KASHMIR Avengers, their team manager and the coaching staff as well? नासिर सर को ही करना है. I request Nasir sir to kindly present the check prize of 2 lakh rupees to the runners up team. I request all the players from AQUA KASHMIR Avengers to come and collect all the players and all the staff. Cheer up, come on, played great game. Kindly collect the check prize of 2 lakh rupees as the runners up award. Can all the officials join kindly? Can we have the head coach from AQUA KASHMIR Avengers? We have the check prize of 2 lakh rupees for the runners up.
I request Mr. Yasir Majid Saab to kindly present the award to player of the tournament, that is Thank you. a mobile phone and a hamper. Okay, before we announce the winners to come up onto the stage, Afreen Pare is with us, who is the best goal scorer. Now I request United Elegant Football Club team to kindly come up and collect your awards. Can we have a huge round of applause for the winners? सीधे पोडियम पर ओए Stage. भाई थोड़ा आगे हो रहा है थोड़ा आगे हो रहा है क्या कैसा लगा खाइबर ऑफिशियल्स भाई पीछे तम पत गई हूँ टेक्निकल पन वर्ड सारे जो ना बचे हनान वनान छ ना यम एकीम वसीम खान एकीम चलिए कुछ चेक दीदी मैं तब तक अवार्ड पीच में है प्लीज I request United Elegant Football Club alongside their officials to please come up onto the podium. contribution है
We have RJ Rafiq, the brand ambassador of Kashmir Super League 2025. Ladies and gentlemen, a huge round of applause. Now we have the award for someone because of all this has been possible. Nuzhat Gul, can we take your award from Nasir? Directed by Wasim Khan from Khyber Cement. Can we have a round of applause? Now the other award is for Athwas Hyundai, who has been a proud sponsor of Kashmir Super League. I request Mr. Yasir Majid to kindly collect the award. Can we have a huge round of applause for Mr. Yasir? Can we have a huge round of applause for Yasir Majid from Athwas Group? Another award is for Event Emporio. I request Miss Matina Rajput to collect the award from Mr. Nasir. The next award is to be collected by RJ Rafiq as it goes to the Red FM for being the radio partner of Kashmir Super League. Next award is for District Football Association Srinagar, who have been with us. I request Professor B. Shah Saab to kindly collect the award. Next award goes to Yasir Ahmed, DSP JNK Police Department, for providing us all that was required. On behalf of them, Nazir Ahmed will collect the award. Next award is for the AG's office football team, who have given so much to the history of JNK. I request Mr. Tajamul Hussain, manager, AG's office, to kindly collect their award. Next award is for the Joy Bean for being a proud sponsor of Kashmir Super League. Now I request everyone to wait as we have an award for. Okay, before doing that, we have an award for the emerging players. We have Ayan Bilal from Green and Heroes Football Club and Rizwan Mohideen from Green and Heroes. Another award is for Rizwan Mohideen, who is also a young prodigy of the league. I request Shri Sarmad Hafiz ji and Miss Nuzhat Gul to kindly present the award of gratitude to our chief guest for tonight, Mr. Nasir Aslam Wani Saab. Can we have a huge round of applause? We have an award for the Red FM. Before that, an award for our beloved Mr. Shri Sarmad Hafiz. Can we have a huge round of applause?
Now we have another award for our radio partner, that is Red FM, and I request RJ Rafiq to kindly collect the award. Now this is the time for the final award. I request the captain of United Elegant Football Club to come and collect what they have been fighting for from day one. The trophy of Kashmir Super League 2025. It was as beautiful as the final played today. I request all the guests to please accompany the players and the officials. सामने आना था। जरगर कोद को समीर माइक देता ही हुए Well, this Kashmir Super League has been nothing less of a roller coaster ride. That's all.
thank you to all the sponsors, to all the partners, to the camera department, to the media, to logistics and all the members. I thank each and every one of you, especially the fans who came in huge numbers and came here to support their teams, came here to support the grind and grit from the players. I thank each and everyone who was a part of Kashmir Super League 2025. Thank you so much. Stay tuned on to the next year. Kashmir Super League, khelo dil se. ये भी लिया है इसने उन छोटे बच्चों हाँ दे दे माइक मेरे को दो को दे लाइव ये लाइव का है Sure. Now some of the ये चल रही है. Some of the operational awards are still pending. So the first award goes to none other than the backbone of Kashmir Super League, Dawood Khan. The next, none other than Hanan Butt. He serves as the oxygen for Kashmir Super League. The nervous system of Kashmir Super League, Shakir Ahmed. Next one, Hanan. Next, Shakir Ahmed. Shakir. Yawar from Bandipura. Mehran Ali. Samir Zargar. Kamran next. Tabish. तेरा क्या नाम है? सलमान. तेरा क्या नाम है? नाम क्या है? हमजा. उधर से खैबर के कोरला. Hamza next.
उमर उस्मान इधर ही है नहीं बात मेहरान अली शाकिर नहीं मैंने जो बदला है So now I officially announce the closure of Kashmir Super League. हाँ? कौन? कहाँ है? मुदस्सिर. ये लो. अच्छा ये ना ये जो मुझे नहीं बात मुझे बंद. यार मुझे ये जो कुरान है. कौन? रोहन लंकर. अमित दिमाग में बस नहीं वाला. You know, unprofessional. Dress code issue. Bas done. Director Health on behalf of Sajid Soap. Now the next award, the Director Health Services Kashmir. Sajid sir will collect on behalf of the Director Health Services, please. Sajid sir will collect the award for Director Health Services for providing a wonderful medical support for Kashmir Super League throughout the period. So thank you. So next award is Burhan. ये मानता है खैबर की बोला ना जानता खैबर की जावेद साहब जो आखिर में से दिखते हैं बस अस्पताल Cheese. Suor. ऐसे बॉल भाई कुछ अच्छे से मज़े वारिया I request the players though. Academy players come on. Coach Salman है हमारा ग्राफिक. अभी नहीं है. No man. Fahim. Stop आखिर थी ये तो 844 या पद्म मोहम्मद साहब ने. Ayan. आरिफ अवार्ड वापस मुझे फोटो तो तौफीक समीर अनस ये करीब बांध ना खुले तौकीर काशिफ he has been a hard worker since day one. अनस ताहिर सोलिया मनान Inam from Atwas. Now special award for Inam from Atwas. असल नाफरूच में बन जाबर बेचक कोई नहीं एक बॉल बॉज में ऐसे पानी ना पानी सॉरी है कहां गुमिस और कोई है ना सो थैंक यू ऑल साजिद ये बजा तो फोटो यार See you Manza. Sir, you are the backbone calligraphy.
संसार, दिल से खिलेंगे सपनों के रंग, नाम गुंजेगा आसमान के पार, कश्मीर सुपर लीग अपना संसार, दिल से खिलेंगे सपनों के